ये आप हमें आपने कहा वी आर नॉट मेंबर्स ऑफ पीटीआई. Yes. So when you're concerned about millions of persons, what harm will be done to if they were contested the election? If you are saying they're not, तो आपने कोई disclosure नहीं कर रहे हैं. किस बेसिस पे आप इनको माना कर रहे हैं? बाकी तो चलें कुछ भी हम मान लेंगे, मगर अकबर अहमद का तो आप खुद तस्लीम कर रहे हैं फाउंडिंग मेंबर है वो. सर फाउंडिंग मेंबर टर्न्स अगेंस्ट हिज पार्टी, तो क्या वो पार्टी ये नहीं है. देखें, he is not running against it. He's saying do things properly according to law. हो सकता है उनका मौक़िफ़ गलत हो. जी आप पार्टी फंडिंग सही करें, आप इलेक्शन सही करें. अब ये it doesn't mean कि you are, देखें, the greatest strength comes from those who oppose from within. ठीक है कि जी ये ऐसे ना करो. और अमेरिका में भी तो some of the greatest judgments were initially in minority and later on became the majority because they maybe had greater foresight, saw what should have been, and they had greater vision, but they were in a minority. But subsequently, with a lapse of time, they became in a majority. So ये किधर से आप इनको कह रहे हैं मेंबर नहीं है? आपने कह दिया काफी है. मैं आपको दो नहीं, कैसे आप कह रहे हैं मेंबर? दो मिसालें दें. क्योंकि आपने खुद देखी, तस्लीम किया है फाउंडिंग मेंबर है, फिर किधर से चला गया ये? नहीं, at some point in time he come a founding member can have differences with his party and leave the party. That's called democracy. परसों ही एक इंसिडेंट हुआ है. नहीं, परसों की बात नहीं कर रहे, केस की बात. नहीं, आप इसका जवाब दे देना. आपने किस बेसिस पे तयन किया है कि ये मेंबर नहीं है आपके? इसके ऊपर पार्टी का मौकिफ आया है कि he was given show cause notice. दिखा देना वो show cause notice. सर वो तो लगाया हुआ है. कहीं नहीं लगाया. in any case. नहीं, in any case नहीं दिखाई है हमें. देखिए आप, हम सवाल पूछते हैं, आप कहते हैं नैनी केस. देखिए 205 में लिखा हुआ है कि आप किसी मेंबर को निकाले तो तरीकेकार भी दिया हुआ है. आप बेशक हम ये नहीं कह रहे कि उसको आप रखें, वो फॉलो किया होगा ना, वो दिखा देते ये देखिए हमने इसको निकाल दिया, खत्म. वो तो आपके सामने चैलेंज नहीं हुआ ना मामला के आया. देखिए नो, आपने प्ली ले ली ना, आपने कहा ये मेरा मेंबर नहीं है. वंस यू एडमिट मेरा मेंबर है और फिर क्या मेरा मेंबर नहीं है, बर्डन इज ऑन यू. चलें, तो इस पे तो कोई दो राय नहीं होगी ना. चैलेंज नॉट us. Yes, the party will defend, but let him challenge that. There is no court proceedings under which or any other law under which he has ever challenged that. So why this is a matter within the party? मैं सिर्फ कल आपकी बात का जवाब दे रहा था कि there is a founding member of this party which has publicly joined MQM only 3 days back. So does he remain being he has been consistently for 27 years member of this party. So any person can नहीं हो सकता है कल आप join against his party. नहीं, आप ये तो फिर आपने एक प्रूफ दे दिया ना. अब बाबर अहमद साहब के लिए भी प्रूफ दे दें कि उन्होंने फला पार्टी ज्वाइन कर ली, बात खत्म. अब ये आपके देखिए, मेराज मोहम्मद खान साहब तो शायद इस पास्ट हुए, अब्दुल अजीज खान साहब हैं पार्टी में, छोड़ गए थे. मैं मेराज मोहम्मद खान साहब की ही एग्जांपल देने वाला था. He was a founding member of PPP, but he had differences in 1972. तो आपकी पार्टी में आ गए. He left. आपकी पार्टी में आ गए ना, तो ये नाम आपने लिखे हुए ना. अब ये फौजिया कसूरी साहिबा हैं या चली गई हैं? तो देखिए, जिनके नाम फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में, कम से कम आप उनको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना. क्यों एक मतलब इस वक्त मामला पार्टीज की इंटरनल वर्किंग का नहीं है. इस वक्त तो ये है कि आया पार्टी को पार्टी सिंबल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए. चलिए ये बात आगे बढ़ाए ना, हम ये बात बार सुन चुके हैं. मेरी गुजारिश ये है कि डिनाइंग पार्टी सिंबल, आगे खान साहब वी हैव हर्ड दिस ना, सिंबल वाली बात. वो सिंबल वाली हमने बात सुन ली. अब हमने आपसे एक सवाल पूछा तो आप उसको कहते हैं चलें उसको छोड़ें. 205 सेक्शन 205 है, फिर उसको भी डिक्लेयर कर दें अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन एक्ट का, कि अगर आप मेंबर को निकालना चाहे खुशी से निकालिए, हम कब मना कर रहे हैं. अगर एक तरीकेकार है निकाल लीजिए. उसके तहत सस्पेंशन और एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर 205 में लिखा हुआ है. क्या हम इसको भी इग्नोर करें? आप कहते हैं चलें जी छोड़ें उसको. क्यों छोड़ें हम भाई? वो हमारे सामने खड़े हुए हैं ना, यही तो मसला है. अगर वो नहीं आते, अगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन आता तो फिर हम छोड़ देते इस बात को. सर गुजारिश ये है कि अगर यहाँ एग्रीवेंस सेक्शन 205 का है, देन ही वुड हैव बीन ए पिटिशनर दैट
he has been expelled. आप दिखाइए ना मैंने ये एक्सपेल किया हुआ है। वो तो क्वेश्चन जनाब के सामने है ही नहीं है, क्योंकि आपने पिटिशन में कह दिया कि मेरा मेंबर नहीं है ना, तो आप ये कहने से बस काफी है पार्टी से नहीं। अगर इसमें इनका डिफरेंस है तो पार्टी को सू करते एंड वुड हैव चैलेंज दैट टर्मिनेशन। मेरा कोई डिफरेंस नहीं है, मैं तो पार्टी में काम करना चाहता हूँ। That is something to be decided by a court if he challenges his termination. That is not being challenged before this honorable court. If you were in his place tomorrow, how would you feel? I will go to a proper court. Why would you challenging go? my no? You should show me. मैं 205 के तहत में challenge करूँगा. No, you don't prove a negative. You prove a positive. If they had expelled you, you will go to a court of law and say this expulsion is unconstitutional. If there is nothing there, why should you go to a court of law? You are a member. Khatam. The party is denying my membership. He should go and prove before a court of law. No, party हो फिर को मैं ही deny कर रहा हूँ, तो देखिए self serving argument तो नहीं चलेगा ना। self serving नहीं, ये चलिए खैर आगे बढ़े। We have to conclude this now. मेरी गुजारिश ये है कि denying party symbol, ये एक अलग बात, is going to disenfranchise millions of voters who want to vote for the candidates nominated by PTI. ये आपने कह दी बात, हमने नोट कर ली। Next point. The result, what is it that is before this honorable court? That is, objectives resolution article 2(1) is being violated. देखिए अब एक बात आ जाएगी, do you deprive 850,000 of your memberships for the right of vote? You can't say कि मेरे लिए ये होगा स्टैंडर्ड और दूसरे के लिए ये होगा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हैज टू बी द सेम। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान इन मिलियंस में 5 करोड़ हो सकता है वोटर हमारे हो, आज बाय दिस एक्ट ऑफ ECP दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू वोट, व्हिच इज सुन चुके हैं ना, ठीक है ना। अब इसको आगे बढ़ाए ना बात को, इसको आर्टिकल 2A के तहत भी देखे ना, हमने पढ़ा हुआ आर्टिकल जनाब की, ठीक है, लेकिन मुझे भी पढ़ लेने दें। हाँ पढ़े मगर टाइम की बात है फिर। 2A, the principles and provisions set out in the objectives resolution produced in the annex as hereby substantive part of the constitution and shall have effect accordingly. अब इसको annex पढ़ेंगे तो उसमें जो पहली चीज दी गई है वो chosen representative की बात की गई है। सर इसमें ये कहा है wherein the state wherein state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. अगर एक political party जिसकी perhaps बहुत बड़ी following है उसको election से बाहर कर देंगे तो फिर उस state को कौन represent करेगा? chosen representative तो बहुत सारे फारिग हो गए। नतीजा क्या है ऐसे election का जिसमें एक popular party with following is deprived of contesting the election, participating in the election, it virtually deprives and deprives millions of vote of their follower. Even ये million वाली बात हो गई ना, आगे बढ़ते हैं ना जी। अब ये हमने we've noted it many times. It's against the principle of chosen representative. अब आखिरी बात मैं कहूँ, sir, this is a fundamental principle of constitutional jurisprudence, that the constitution is equally a legal and a political document. जी So no court, while interpreting the constitution or its provisions, can ignore the political consequences of its decision. Court or quasi-judicial authority can ignore the political consequences of its decisions, which at times can come back to haunt that body. So therefore, ECP has to consider
the consequence of its decision, what will be the political consequences, because political parties have political implications. And Article 17 is there to protect the political rights, and the most important right is the right of vote. So therefore, the entire political polity and the constitution virtually would disenfranchise tens of millions of voters, which will render the election as and its results as without legitimacy and without credibility. So therefore, depriving citizens of the right of vote will have very, very serious consequences for the future of the country, and will have the assemblies elected without full representation of all the voters and all the political parties, will render the election as not legitimate and not credible. So that is something which I'll appeal before this Honorable Court to see that these consequences should not follow, and these consequences of a very serious nature, and I'll appeal before this Honorable Court that such decisions at times have implications running into years and years. Today, even today, some of the decisions taken by this Honorable Court, we quote them, that has really hurt our polity over the years. Even 70 years have passed since Maurito Mizutin's case, we keep talking about it. So therefore, every decision being made by the Apex Court has to see what will be its consequences. Thank you very much. Thank you.